A very good morning to everyone. In chapter number 9, coordination compound, till now we have learned about the different terminologies of this coordination complex, how the salts are formed, how the ligands are classified on the basis of density as well as on the charges. Then we have learned about coordination number, and in the previous lecture we have done with the nomenclature of coordination salt or coordination compound. Or you can say complex compound, right? Let's take a quick revision for it. We have done with the different naming of complex compound, that is K4, FeCN6. How we'll write the nomenclature? First we are supposed to write the cation name if it is in simple. So here our cation is potassium. So it is potassium. Then naming of ligands in alphabetical order. Here only one type of ligand is present, that is cyanide, and we know that the ligands which end with I, we just replace that E with O and will write it is 6 times. So potassium, hexa, cyanido. If it is cyanide, we'll remove the E and put O. Hexacyanido. Here iron, the central metal atom is iron. It is in complex, therefore we have to write in ate form, ATE. When the central metal atom is in complex anion form, we are supposed to write 8 at the end of that metal. So here the coordination in coordination complex, the oxidation state of iron is, we know how to calculate. Potassium, it is 4 plus X plus cyanide is -1, it is -6. There is no charge on the complex, it is 0. Therefore X is equal to +2, right? Here iron is in +2, therefore we'll write ferrate. In Roman we'll write the oxidation state, that is 2. So this is potassium hexacyanidoferrate 2. This is how we learn. We'll take the next example. If the ligands are different, for an example, if we are having PT, H2O twice, NH3 twice, Cl2. Here the complex is cation. Our cation is in complex form and anion is in simple form. So here the central metal atom will written as it is. Now the naming will start with the ligands in alphabetical order. Water is your aqua and NH3 is your amine. Whenever as a ligand you are writing amine, don't forget to write double M, AMMINE, it is amine, right? So alphabetical order, amine will come first, right? So it is diamine, then 2 water molecules are there, therefore diaqua, diamine, diaqua. Here the central metal atom is in cationic form, so you will write as it is platinum. The oxidation state of this platinum, first we'll find the oxidation state. Platinum is X plus water is 0 plus amine is 0, उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, वाटर के ऊपर भी चार्ज नहीं होता है, plus 1 chlorine is having -1, we are having 2 chlorine, therefore -2 is equal to complex के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, that is 0, therefore platinum oxidation state X is equal to +2. So here in Roman we'll write platinum 2. अब anion के अंदर हमारे पास क्लोरीन है, so we'll write chloride, right? Here you don't need to write dichloride or trichloride or anything. So this is how we'll name diamine, diaqua, platinum 2 chloride.
Don't forget to write double M in case of amine. So let's go with another example. We just go through the 2-3 examples and we'll come to know. The next is your NiCO twice, H2O twice to the power plus 2, right? Again, here two different type of ligands are there. One is carbonyl and one is water. So water is your aqua and carbonyl is C. So according to alphabetical order, which ligand comes first? It is aqua. There is no anion present over here. So first we'll write diaqua. Here carbonyl is again 2 times, therefore dicarbonyl. Diaqua, dicarbonyl. Here nickel, that is your central metal atom, it is in cationic form. Therefore we'll only write nickel. Diaqua, dicarbonyl, nickel. In bracket you will write the oxidation state of nickel, that is 2. See, carbonyl is 0, aqua is 0, is equal to complex के ऊपर plus 2 charge है, therefore nickel is in plus 2 state. You will write over here 2. Diaqua, dicarbonyl, nickel 2. अब यहाँ पे कोई anion present नहीं है, no anion is there, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे कोई anion होगा because plus 2 charge is over here. So we'll write here simply ion. Okay. Let us take another example. That is, for an example, if we are having Na4, PtCN twice, Cl4. अगर ये complex है तो क्या होगा? Here our cation is simple. So first of all we'll write sodium. You don't need to write tetrasodium, right? Sodium. Then come to the ligand part. Alphabetical order. This is chlorido and this is cyanido. Which will come first? Correct. Chlorido will come first. How many chlorine are there? 4 chlorine are there. Therefore tetrachlorido. 2 cyanide are there. Therefore dicyanido. Here the central metal atom is platinum and it is in anionic form. Therefore we are supposed to write 8 over here. After platinum we are supposed to write 8. So we'll write platinate. Not platinum, it is platinate. And in bracket the oxidation state of platinum. क्या होगा oxidation state of platinum? Here sodium is plus 4 plus X. 2 cyanide are there, therefore minus 2, plus 4 chlorine are there, therefore minus 4 is equal to 0. This 4 and 4 will cut, it is minus 2 will come here, plus 2, therefore platinum over here is in plus 2 state. Understood? Let us take another one more example. For an example, we are having NiCO4 and there is no charge on this complex. So what you will write? Yes. First we'll write the ligand's name. 4 carbonyl are there. Therefore tetracarbonyl. Tetracarbonyl. अब यहाँ पे nickel. There is no charge on the complex. It is neutral complex. So we'll write again as it is nickel. Nickel को ऐसे ही रखना है. And in bracket you will write the oxidation state. तो यहाँ पे nickel का oxidation state क्या होगा? X plus 0 is equal to 0. Therefore nickel is in 0 state. So you will write tetracarbonyl nickel 0. Correct? इसके आगे पीछे ना ही ये प्लस फॉर्म में ना नेगेटिव फॉर्म में. Therefore we are not supposed to write ion over here. Correct? और कोई डाउट? चलो एक और लास्ट में कर लेते हैं. लास्ट वाला अगर हम देख लेते तो platinum Cl twice, H2O twice
टू द पावर -2, राइट। अब इसका कैसे लिखेंगे? सी हियर द कॉम्प्लेक्स इन एनायन फॉर्म, सेंट्रल मेटल एटम इज इन एनायनिक फॉर्म, मतलब कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा एनायन है और वहाँ सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स में फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे? प्लैटिनेट, राइट। सबसे पहले अभी लिगेंड को देखें, कौन सा पहले आएगा? एक्वा, सो इट इज डाई एक्वा एज देयर आर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 क्लोरीन आर देयर, देयरफॉर डाइक्लोरिडो, डाई एक्वा, डाइक्लोरिडो। यह प्लेटिनम, प्लेटिनम कैसा है? एनायनिक में, कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, देयरफॉर वी आर सपोज टू राइट प्लेटिनेट। एंड उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? X प्लस ये हो जाएगा -2, दिस विल बी 0 इज इक्वल टू -2, -2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0, देयरफॉर प्लैटिनेट 0, करेक्ट। कोई डाउट? अभी यहाँ पे एनायन है तो मतलब हमें पीछे क्या लिखना है? आयन। कोई डाउट? चलो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, one more example, that is K3Cr OX थ्राइस। इसे कैसे लिखते हैं? अब ये OX क्या है तुम्हारा? OX इज योर ऑक्सलेट, राइट। अभी सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते थे क्रोमियम की, तो ऑक्सलेट, ऑक्सलेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2, इट इज C2O4 -2, इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस, तो 2 नेगेटिव चार्जेस आर देयर, therefore one oxalate can donate 2 electrons, right, 2 pair of electrons and forming 6 coordinate bond, right. So here first of all we'll find the oxidation state of chromium. 3 potassium are there, therefore 3 plus chromium is X plus how many oxalate are there? 3, and the charge of one oxalate is -2 is equal to, complex के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है, 0, therefore X is equal to, this is 3 2s are 6, 3 -3 उधर जाएगा तो +3, तो ये chromium is in +3। अब कैसे लिखते हैं उसका nomenclature? So first of all we'll write the cation part, that is potassium, then here oxalate is there, 3 oxalate are there, तो हम क्या लिखेंगे? ट्राईऑक्सलेटो, क्रोमियम एनायनिक कॉम्प्लेक्स 6 फॉर्म में है, तो क्रोमियम, क्रोमियम का क्या हो जाएगा? क्रोमेट, बिकॉज कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायन है, तो सेंट्रल मेटल एटम का क्या हो जाएगा? क्रोमेट, इन ब्रैकेट रोमन में 3। बोलो आया समझ में? एक और एग्जांपल देख ले, लास्ट वन, suppose we are having CO, NH3 4, H2O, then Cl, और बाहर रख देते हैं Cl2। चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसको क्या करेंगे? आर कैटायन इज कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? लिगेंड से करेंगे, एक्वा, क्लोरिडो एंड अमीन। सबसे पहले कौन आएगा? अमीन। कितने अमीन है? 4, तो हम लिखेंगे टेट्रा अमीन। अगेन हमें डबल एम लिखना नहीं भूलना है। टेट्रा अमीन, एक ही एक्वा है, देयरफॉर ओनली एक्वा। एक ही क्लोराइड है तो क्लोरिडो। यहाँ सेंट्रल मेटल एटम हमारा कॉम्प्लेक्स में है और वो कैटायनिक फॉर्म के अंदर जा रहा है, तो हम कोबाल्ट को एज इट इज़ लिखेंगे, कोबाल्ट ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा कोबाल्ट का? चलो निकाल दे, X प्लस अमीन इज 0, वाटर इज 0, क्लोरीन इज -1 इज इक्वल टू, बाहर 2 क्लोरीन है, सॉरी इधर ही लिखना है हमें, बाहर 2 क्लोरीन है उसको भी ले लेते हैं, -2 इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो जाएगा -3, -3 उस तरफ जाएगा तो +3,
तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट इज इन +3 स्टेट, +3 के बाद बाहर क्या है, क्लोराइड, तो यू विल राइट क्लोराइड। क्या हो गया, टेट्रामीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बोलो यहाँ पे समझ में आया सबको, कोई डाउट? ठीक है, तो here we'll complete our nomenclature of complex salt. In the next lecture we'll learn about the isomerism in coordination compound, the different type of isomerism. First we'll go for the structural isomerism and then we'll go for geometrical isomerism. Clear? So just go through the lecture, keep on watching and try to understand. I hope the lecture will be clear, it will be